and welcome to all my viewers. Class 9 Surface Area and Volume Exercise 13.4. 4 question already we have discussed of this exercise. Today we are supposed to start with question number 5. Okay, question number 5. A hemispherical which is half of a sphere है ना, bowl made up of a brass has inner diameter. This is diameter given 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating. We want to plate a material that is tin इट ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ हमें उस पर टिन प्लेटिंग करना चाहते हैं, मतलब दूसरे किसी सबस्टांस की कोटिंग करना चाहते हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ 16 पर 100 centimeter square. If my area is 100 centimeter square, then I have to give 16. I need to check what is my area, then accordingly I'll pay for that. Fine. Okay. Now I'll start. Hemispherical bowl and diameter is given 10.5. Diameter of the bowl. Diameter of the bowl, that is 10.5 centimeter. I have to find out the radius of the bowl, and bowl is in hemispherical shape. 10.5 divided by 2, when you will divide you will get 5.25 centimeter. Okay, you got the radius. अगर आपको सिर्फ अंदर की तरफ से प्लेटिंग करनी है, that means we need to find out CSA of hemisphere. CSA of hemisphere, and we know the formula, that is 2 pi r square. About the formula we have discussed in the previous video. We know the value of radius, that is 2 multiplied by pi will be taken as 22 by 7 unless it is stated. R is 5.25 and square of that. Open it. 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 5.25 multiplied by 5.25. If you want to cut it by the table of 7, you will get 0.75. Multiply all the numbers, then you will get 173.25 centimeter square. When you will multiply all the number, you will get 173.25 centimeter square. But the question doesn't end here. Cost of tin plating. Cost is also given. The cost of tin plating. Tin plating for 100 centimeter square. अगर 100 centimeter square का एरिया था तो the cost is given ₹16. I need to find out for 1 centimeter square using unitary method. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 100, बट माई एरिया इज़ 173.25. आई नीड टू चेक 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया के लिए मेरे को कितना पे करना पड़ेगा 16 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 173.25. You can solve it further. You will get ₹27.72 rupees I have to pay if I want to do tin plating on the inner surface area of that hemispherical bowl. Okay, this is how we can find out the cost of tin plating. Let's go for question number 6. Question number 6 says find the radius of the sphere. Okay, now they are asking us to find the radius. What is given to us? The hose surface area is given. Okay, if only surface area is given, that means here they are talking about total surface area. And I told you in case of sphere, okay, total surface area and curved surface area both are same. So here they have written only surface area, that means we are talking about total surface area. Find total surface area is given. We will use the same formula, that is surface area of sphere, that is what is given 154 centimeter square. Do we know the formula? Yes, of course we know, that is 4 pi r square is equal to 154. 4 multiplied by pi, we will use 22 by 7 multiply by r square, that is 154. R square equals to, I will put r square here, rest of the term I will shift to this side. 154 multiply by 7, 7 will go and multiply
4 and 22 will become as denominator. Okay. Now 22 sevens are 22 is 154. What is left? 7 multiplied by 7, and what is left as denominator? That is 4. R square is equal to 7 multiplied by 7, and here 4 I can write it like 2 multiplied by 2. नेक्स्ट टर्म में आप क्या करेंगे? रूट में कन्वर्ट कर देंगे. इफ़ इट इज स्क्वायर एंड यू वांट टू शिफ्ट इट टू द राइट हैंड साइड, यू मे कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ रूट. रूट के अंदर से निकलने का यू नो कि क्या आपके पास रूल होता है, जो पेयर में नंबर होते हैं ओनली वन आउट ऑफ देम कैन कम आउट. इसमें से बाहर निकलने का रूल यही होता है, जो पेयर में होते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है. 7 ऊपर से आ गया और नीचे से कौन आ गया? 2 आ गया. रूट विल बी डिसअपियर्ड नाउ. सो रेडियस हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 7/2. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू decimal, then your answer will be 3.5 centimeter. Okay, that was too easy question. I hope you have understood it well also. Now question number 7. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Okay, here no direct information, no direct numerical values are given. The diameter of moon is given, and that is approximately 1/4 the diameter of earth. Fine. Find the ratio of their surface areas. Both are spherical in shape, so we will use total surface area of both the earth as well as of moon. इसने बोला मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का हाफ है. लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ and let the diameter of earth, diameter I will take d1. Okay, if diameter of earth is d1, then the radius will be half of it, that is d1 divided by 2. Fine. Then if the diameter of earth is d1, then the diameter of moon will be diameter of moon, that will be 1/4 of it. 1/4 means d1 divided by 4th. उसका 4 टाइम है वो, ठीक है, सॉरी उसका 1/4 टाइम है वो. देन द रेडियस विल बी, इसका हाफ कर देंगे, इट विल बी d1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4. जब भी आप हाफ करते हैं तो जो टर्म आपके पास होती है डिनोमिनेटर में उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे तो इट विल बी d1 डिवाइड बाई 8. फाइन. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द surface ratio of surface area. Here I will write S1 surface area of earth ratio surface area of moon. Fine. अर्थ का सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ दैट इज 4 पाई r1 स्क्वायर. फाइन. r1 आई एम टेकिंग बिकॉज d1 आई हैव टेकन डायमीटर, तो रेडियस आपके पास ये हो जाएगा. मैं r1 से डिनोट कर रही हूँ. एंड द डायमीटर ऑफ मून मैं रेशो में लिख लेती हूँ. डायमीटर सरफेस एरिया ऑफ मून विल बी 4 पाई r2 स्क्वायर. ओके. नाउ 4 पाई radius. What is the radius of earth? That is d1 upon 2 whole square, and it is 4 pi. What is the radius of moon then? d1 upon 8. d1 upon 8 whole square. Fine. Now if you want to write your answer in the form of numerator and denominator, because ratio can be converted in that form also, you can 4 pi d1 upon 8 whole square. इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. नाउ ओपन द ब्रैकेट, इट विल बी d1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, देन अगेन d1 स्क्वायर डिवाइड बाई 64. नाउ हाउ टू सॉल्व व्हेन 4 टर्म्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट वाला आप ऊपर ही रखें और जो सबसे लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले के पास चला जाएगा. लास्ट विल गो ऑन द फर्स्ट, और जो मिडल वाले हैं ये दोनों आपके डिनोमिनेटर बन जाएंगे. ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे जो नीचे वाले हैं. द सेम आई डिड. d1 का स्क्वायर और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. फाइन. d1 स्क्वायर कैन बी कैंसल्ड, और आप अगर आप 4 की टेबल से इसको कट करेंगे यू विल गेट 16:1 सॉरी. Fine. This will be the ratio of their surface areas. Surface area of earth will be more, that's why it is 16, and surface area of moon will be less, that's why it is 1 here. Fine. Let's go for next question of same exercise. Question number 8. We have a hemispherical bowl. Question number 8.
Fine. A hemispherical bowl is made up of steel, okay, 0.25 centimeter thick. Fine. This is the thickness of the bowl. Inner radius of the bowl is, this is radius 5 centimeter. Find the outer, okay. All the dimension of inner are given, and at last they are asking outer curved surface area of the bowl, hemispherical bowl. Fine. Now we will try to draw the shape. This is the bowl, hemispherical in shape. Like that, the shape of the bowl. Fine. And the radius, inner radius is given, that is 5 centimeter. Okay, and this thickness, see, this thickness is also given. This thickness, again I am pointing it out, this thickness is 0.25 centimeter. Fine. Inner radius, it is directly given, that is 5 centimeter. Now dear student, if I want to find out the outer radius, तो देखो inner radius इतना था, अगर मैं इसके अंदर ये जो width है, ठीक है, ये जो आपके पास गिवन है कि दिस इज़ द थिकनेस, अगर मैं ये थिकनेस ऐड कर दूँ तो ये क्या मेरे पास रेडियस ऑफ आउटर नहीं बन जाता है? करेक्ट, नो? सो आउटर रेडियस देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे आउटर की डायमेंशन पूछी है तो आउटर रेडियस तो ज़रूरी था, 5 + 0.25 सेंटीमीटर. जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 5.25 सेंटीमीटर. फाइन. आउटर रेडियस मिल गया. अब हमें हमसे क्या पूछा है? फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. आउटर CSA of bowl, that is 2 pi r square. Fine. That is 2 pi r square. Put the values. 2 multiplied by 22/7 multiplied by 5.25 multiplied by 5.25. You can cut. It will be 0.75. 44. 22 multiplied by 244. 0.75 multiplied by 5.25. Multiply all the numbers. You will get 173. Same calculation we have used in the previous question also. 25 centimeter square. This is the outer curved surface area of that hemispherical bowl. Okay. This question is done here. 9th question and the last question of this exercise. A right circular cylinder. The figure is also given along with that. A right circular cylinder just encloses a sphere. Okay. ऐसे cylinder के अंदर एक sphere पूरा फंसा हुआ है. Of radius. This radius is of cylinder. Surface area of the sphere we have to find in first part. Curved surface area of the cylinder we have to find out in second part, and the ratio of area obtained in 1 and 2. यहाँ से जो surface area है, यहाँ से जो curved surface area we have to find the ratio of that. Fine. This is the question. Surface area of the sphere हमें find करना है पहले. I will try to draw the shape. ये आपका स्फीयर है जो सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, जो बिल्कुल उसके अंदर फंसा हुआ है. एंड दिस रेडियस इज़ गिवन r. ओके. अगर उसका रेडियस r है तो आपके पास इस सर्कल का रेडियस, ठीक है, जो स्फीयर आपके अंदर, जो इसके अंदर फंसा हुआ है सिलेंडर के अंदर, द रेडियस will be r of that particular sphere. In first part they are asking us to find out surface area of sphere. And what is the formula of total surface area of the sphere? That is 4 pi r square. Okay. R is r, so no need of putting the values. No need of putting the value of pi. Let it be like that only. Okay. ये आपके पास बन जाएगा. This is the solution of first part. Second part they are asking what is the curved surface area of cylinder. Curved surface area of cylinder, the formula we have used in the previous exercises. Curved surface area says 2 pi r and h. यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं. फाइन. 2 pi r and h. नाउ जस्ट सी, ये पूरा इसके अंदर डला हुआ है. एंड दिस हाइट, ये रेडियस है, देखें, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द
स्फीयर। और अगर मैं रेडियस को डबल कर देती हूँ तो वो हमारे पास इसका डायमीटर भी बन जाता है और वो मेरे पास इसकी हाइट भी बन जाती है। हम देखें तो जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, इजंट इट डबल ऑफ द रेडियस, वो मतलब डायमीटर के इक्वल है। थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर तक कर देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब इसका जो डायमीटर है वो सिलेंडर की हाइट भी बन रहा है। तो h वी कैन यूज़ हियर डबल ऑफ रेडियस, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ इट। We can use it here. R will be used same and H will be used as 2R. Then 2 to the 4 pi R and R will become R square. Okay. So what is the curved surface area of the cylinder? That is exactly the same the surface area of the sphere. Now in the third part they are asking us to find the ratio that is S1 surface area of the sphere ratio S2 surface area of the cylinder. Find it out. 4 pi r square is the surface area of the previous figure and 4 pi r square is the surface area of the second figure. That means the ratio will be 1:1. I hope you have understood the question very well. Questions were not that much tough. They were very easy. And I tried my best to make you understand all the question. Student, if you really like the video, please do like the video. Share it with your friends. If you are new at this channel or you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe. We will meet in the next video with the new exercise that is 13.5. Till then, goodbye and take care of yourself.